सो आपने टाइटल से अब तक जो है समझ लिया होगा दैट आई एम हियर फॉर अ मोटरसाइकिल डिलीवरी। कौन सी मोटरसाइकिल है? वेल इट्स अ वेरी स्पेशल मोटरसाइकिल। 15 साल हो चुके हैं इस बाइक की फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च हुए एंड आफ्टर दैट Triumph has now made so many changes to this motorcycle. It's 40 kgs lighter, it's got a new frame, a more bigger powerful engine, so better equipment, more power, lightweight. What else do you want? So I think the Britishers have done it right this time at least. This is a delivery video of the Triumph Rocket 3R and last में जो है एक मैं छोटा सा snippet दिखाऊंगा of the GT as well. So enjoy the video. Here is the delivery process of the motorcycle and उसके बाद जो है हम मेरे घनिष्ठ मित्र सनी से जो है बात करेंगे। आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो about his experience on the motorcycle and why he bought it. Moment of truth. Oh my God! Congrats to all of us. Congratulations to all of you. And this is a big key for a big motorcycle. I'm looking at on a key, and apparently you press this. You see this is turning green. This means this is connected to the motorcycle. Alright, so I have the keys to the Rocket 3 in my hand and जैसा कि आप देख सकते हो this motorcycle is a monster and monster सिर्फ इसलिए नहीं because it is big, it's actually very compact compared to the previous Rocket 3 but ये monster जो है इसलिए है because of this engine. This is the world's highest displacement engine, largest displacement engine. आप पूछोगे कितना बड़ा? 2500 cc, 2500 cc's, 2400 approximately is what I would call it, 2458 cc's to be precise. It makes 163 pound-feet of torque जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 165 horse power. But then as I always say, numbers में कुछ नहीं रखा है. But when you look at this motorcycle, यहाँ numbers बहुत ज़्यादा matter करते हैं. This is the second iteration of the Rocket 3. The first one came around 15 years back, and Triumph has outdone themselves when it comes to this one here. It's 40 kgs lighter, basically because of the frame. Because the frame है इसमें which is half the weight than the older motorcycle, and just look at it. It looks like a monster. It is a monster. I still haven't ridden it, but I'm pretty sure बहुत जल्दी जो है हमें कोई मिलने वाली है चलाने के लिए. मैं आपको चला के ज़रूर दिखाऊंगा that how is the motorcycle. But walk around में if you look at it, it's very compact for a 2500 cc motorcycle. पुरानी रॉकेट के मुकाबले काफ़ी compact है गाड़ी. Looks really modern, has got top notch equipment. अगर आप देखो the calipers again are like Stylema, which is like super bike level. This bronze finish here on the exhaust pipes, the headers makes it look really premium, and overall जो fit and finish है बाइक का वो बहुत ही ज़्यादा सही है. स्मार्टली काफ़ी जो है चीज़ें की गई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो फुट पेग्स है वो यहाँ पे जो है बंद किए गए हैं, एंड this is how the motorcycle looks. Another thing that I think I can show you is the front lights. If you look at it, इसको on करेंगे अगर हम, just look at that. LED units look really good and very premium looking. Upside down forks, obviously you got disc brakes वगैरह वगैरह. इन सब के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, but just look at it. This looks like one hell of a machine to ride, and I'm sure सनी भाई साहब जब ये गाड़ी चलाएंगे, लोग उनको नहीं बाइक को ज़्यादा देखने वाले. Now this here is like a retro modern take on the instrument cluster, obviously. So you've got everything digital, but then again it does have the needle which moves around. Riding modes वगैरह वगैरह, obviously it has all the features, all the electronic wizardry on offer from Triumph. So well, when you ride a big 2500 cc motorcycle, obviously you need all of that electronic to tame the motorcycle. Tame से याद आया, the back end, if you look at it, this is a 240 section tire. Again something जो कि production bikes में देखा जाए तो one of the widest है. हाल ही की एक दो बाइक्स है जिनमें आता है, and Ducati Diavel में भी आता है. But then this one here, overall if you look at it, is one hell of a motorcycle, and for approximately 20 lakh rupees on road, this looks the part. And I definitely think अगर मुझे आज के टाइम पे कोई क्रूज़र सो कॉल्ड उठानी हो, पावर क्रूज़र, आई थिंक दिस इज़ द मोटरसाइकिल आई वुड गो फॉर. अब जरा सनी भाई साहब के पास चलते हैं एंड बात करते हैं, पूछते हैं कि उन्होंने क्यों एक रॉकेट 3 खरीदी.
Alright guys, so the motorcycle I was talking about, वो तो आपने देख ही लिया है. ये है मोटरसाइकिलिस्ट सनी स्क्वायर. नाउ भाई साहब ने इसे स्टाइल में चश्मा निकाला है. सनी होल स्क्वायर. हाँ. राउंड एंड स्क्वायर. भाई साहब नॉटी एट 40 हो गए, बट डज नॉट लीव एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक विच इज़ एक्जैक्टली द रीज़न हमारी इतनी पटती है. पटने से याद आया, वाई दिस बाइक, इस बाइक से आपकी क्यों पटी? See, I had the world's fastest bike, and I wanted the world's biggest production capacity motorcycle in the world, which means that it's not only just a superlative, it's also something which also matches my thinking, that you know, if you think big but if you do the correct way, then you can achieve whatever you want. And I had two scale models, one of the Ninja H2 and one of the Rocket 3 always, and of course now those dreams have materialized, they've become big, you know, real. So this, all I can say is that if you keep doing good work, you will keep achieving what you want. And why this bike? Because I think it also not only handles well, it is of course it's got its bragging rights, but it's also got a legacy. It's not just another big motorcycle. 15 साल पहले I think the first Rocket 3 it is the biggest. Yeah. And ये था कि ऐसी कोई मुझे बाइक नहीं चाहिए which cannot handle well. For example, I rode the Boss Horse, although that is not a production motorcycle as such, but you know, handling wise and all these kind of things, you really need a big balls to ride that bike. But this one has been tried and tested. Not only that, this generation is 40 kgs lighter, and it's got the entire gamut of electronics, tech wizardry, whatever you want to call it. And it's even bigger in displacement. And जैसे Americans usually कहते हैं कि there's no replacement for displacement, यहाँ पे Britishers ने थोड़ा apply कर दिया है. 2458 to be precise. It's an engineering marvel. So, and that also in 3 cylinders. लोगों की दुनिया में ऐसे confusions बहुत होते हैं. इस इंसान की दुनिया में अब एक सबसे बड़ा confusion हर संडे जो आने वाला है कि मैं H2 चलाऊंगा कि मैं ये चलाऊंगा. Yeah, so alternate. नहीं तो दूसरा सनी है, वो तो मतलब आ ही जाएगा कभी भी. एक फोन कॉल. आप तो मेरे छोटे भाई जैसे हो. साइज में नहीं हो बट वैसे हो. लॉट ऑफ मोर एक्साइटिंग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम दिस मैन. मतलब मैं बता नहीं सकता अभी, बट देन इतने बड़े प्लान्स है ना भाई साहब के यहाँ पे. Only way to fight age, the only way to fight anything which is negative in your life, I'm not saying age is negative, is that keep doing what you love, keep doing what you want. Don't do it because you have a competition or you want to prove something to someone else, especially on social media. मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ हमेशा, because that will end up actually eating you up from the inside. Don't go after the numbers. अपने passion पे, अपने शौक पे, हर चीज़ पे ध्यान रखो and give it your all. This is what this man has been doing since years now, and अब है आपकी बारी. No, you guys have already seen the Rocket 3R. ये जो है Rocket 3 GT है, and GT का मतलब like obviously Grand Tourer है, and in this case it gets a backrest, a better seat, forward control so that आप थोड़ा सा आगे होके बैठ सको, and it's got taller handlebars, so comparatively this will be more comfortable any day to ride, and long distance आप जो इस पे ज़्यादा आसानी से कर सकते हो, करने को आप उस पर भी कर सकते हो, but then इसमें ज़्यादा आसानी होगी. So although ये 310 किलो की है, but ऐसे लगती नहीं है because well, I'm used to riding a lot more bigger and heavier motorcycles, but then at the same time this feels very different. ऐसे लगता नहीं that you're riding a big 2500cc motorcycle, and I think that is the biggest USP जो मेरे हिसाब से इस बाइक की होगी, that it's compact yet it's big in numbers, but size में काफ़ी compact है. And Triumph has again outdone themselves because displacement बढ़ा दी है, power बढ़ा दी है, weight कम कर दिया है, handling बेटर हो गई है, ब्रेकिंग बेटर हो गई, बट ये सारी बातें हम तब करेंगे जब हम ये बाइक चलाएंगे. सो फिलहाल जो है यहाँ से हम निकलेंगे थ्रॉटल शॉटल शिवम भाई के पास, एंड उसके बाद वहाँ पे जो है ब्लॉग का एंड करते हैं, थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं. एंड दैट वाज द आर, एंड इन दिस केस ये है हमारी GT. एंड नाउ इस मोटरसाइकिल में इफ यू नोटिस फॉरवर्ड कंट्रोल्स हैं, यू आर सिटिंग मोर अपराइट, ऐसे सीधे बैठे हो एकदम. So well, अगर आपको से क्रूज करना है on the world's biggest displacement motorcycle, this is the bike that you would buy. And थोड़ा सा स्पोर्टी चलाना है तो आप R खरीदोगे, right?
ऑलराइट गाइस, तो आ चुका हूँ मैं थ्रॉटल शॉटल एंड ये जो व्लॉग है ये यहीं पे एंड होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एक अच्छा वॉक अराउंड, डिलीवरी प्रोसेस, एवरीथिंग यू सॉ, दिस वाज द ट्रायम्फ फॉर रॉकेट 3, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल। सबसे बड़ा इंजन दुनिया में किसी भी अगर मोटरसाइकिल में है, प्रोडक्शन मोटरसाइकिल में है, वो इस रॉकेट 3 में है। इससे पहले वाली रॉकेट 3 में था जो कि 2200 का था, अब जो है 2458 मतलब 2500 सीसी पकड़ लो उसका है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक दबा देना एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहोगे। विद दैट सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।